So, good morning, student. Good morning, sir. I welcome you in the first session of your chemistry syllabi. I am Professor Kallol Ghosh, Head of the Department, School of Studies in Chemistry. As you know that we have implemented National Education Policy 2020, and we have already circulated the complete course content of M.Sc first semester chemistry, and it is completely based on UGC regulation, and one of the most important concept is learning outcome based system. And our Vice Chancellor, Honorable Vice Chancellor, Professor Sachidanand Suklaji, has instructed us to discuss the actual concept of these outcome based system to the student, so that they can understand the actual meaning of all this system, because the system has been now changed. Okay. So, as usual, this is my first class. So, before going into details of complicated concept of the chemistry, I first welcome you, all the students of first semester M.Sc chemistry, and you will be happy to know that the School of Studies in Chemistry is one of the oldest and very visible important department of Pandit Ravi Shankar Shukla University, and it was established in 1972. And you must know that who started this department, none other than Professor S.G. Tandon. He was the founder, head of the department of this department. And another very important notable thing you must know that this is the DST FIST and UGC sponsored departments. And last year ड्यूरिंग द फाउंडेशन डे ऑफ द यूनिवर्सिटी, आपको मालूम होना चाहिए विश्वविद्यालय का फाउंडेशन डे जो होता है 1 मई 1964 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था. सो एवरी फाउंडेशन डे आवर यूनिवर्सिटी डिसाइडेड टू गिव द बेस्ट डिपार्टमेंट सील्ड, और ये बहुत खुशी की बात है. लास्ट ईयर दिस डिपार्टमेंट इज रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी. So naturally, I must congratulate you for your admission, and you have made a correct decision, as I have already written to your welcome message, because I always consider, although I am a chemist, but chemistry is the, you know that it is the central science, and therefore you have chosen right thing, but you have to do lot of things, and always you see that chemistry is always number one, you know. So in future we'll definitely prepare a T-shirt for the students. So Dr. Indrapal Kharwal, who is the in charge of the student community, he will tell you what would be the color of your T-shirt. Now, as you know that why today I am delivering, you can sit anywhere, any person. Why I am delivering this learning outcome based system, क्योंकि आपको क्लास शुरू होने से पहले एकदम आपको क्लियर कट आइडिया हो जाना चाहिए. एंड यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर ऑफ दिस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. मतलब आप ये मत सोचिए आपका भी उतना ही जिम्मेदारी है जितना कि मेरा जिम्मेदारी है, बिकॉज व्हेन वी कैलकुलेट दैट whole
attribution or whole this learning outcome system, we need the feedback from you. Because after every semester, we will calculate it. And after completion of the course, we will again calculate it. And there are two systems. One is called the 80% from डायरेक्ट रिजल्ट्स. डायरेक्ट रिजल्ट मीन्स जब आपको हम परीक्षा लेंगे, परीक्षा में जो आप नंबर पाएंगे तभी तो हमको समझ में आएगा कि मैंने आपको या मेरे टीचर ने आपको जो पढ़ाया साल भर आपको समझ में आया कि नहीं हो. एंड दैट विल रिफ्लेक्ट इन योर रिजल्ट्स. देन योर इंटरनल असेसमेंट. सो दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट assessment, 80%. And 20% after this completion of the semester मैं आपसे फीडबैक लूँगा. तो ये दोनों को मिला के फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे whether we will achieved or not. And always consider it is a holistic and multidisciplinary approach, integrated approach. तो इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग completely national education policy का पार्ट है. एकदम क्लियर कट आपको हो जाना चाहिए. एंड एज आई टोल्ड यू, आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि व्हाट इज नेम इट सेल्फ इज ए डेफिनेशन. लर्निंग आउटकम बेस्ड सिस्टम. मतलब जो भी आप पढ़ रहे हैं, अभी मैं पूरा समझाऊंगा. अब अगर कोर्स आपको देखेंगे, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका कुछ उद्देश्य होना चाहिए, कुछ आउटकम्स होना चाहिए. आपने परीक्षा में बहुत अच्छा नंबर पाए, फिर यहाँ पे टेस्ट हुआ, टेस्ट में आपने मान लो अच्छा नंबर पाए, फिर आपका सिलेक्शन हुआ एज पर द मेरिट बेसिस. सो आफ्टर स्टडिंग दिस होल केमिस्ट्री यू शुड अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट एंड यू शुड एबल टू डू द एंड ऑफ देयर प्रोग्राम स्टडी. मतलब इतना आपको सीखना पड़ेगा कि जिसके बाद हम बोल सकते हैं यस माई ऑब्जेक्टिव इज फुलफिल्ड. जो मैं सोच के आया था, मैं अभी इसको समझाऊंगा, क्योंकि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कोर्सेस. आपने कोर्स में देखे होंगे कि इफ इट इज ए 4 semester कोर्स, एवरी सेमेस्टर देयर आर 4 different subjects. मे बी क्वांटम मैकेनिक्स, मे बी केमिकल काइनेटिक्स, मे बी मेटल कॉम्प्लेक्स, मे बी नेचुरल प्रोडक्ट्स. तो हर का एक आउटकम होगा, ऑब्जेक्टिव होगा. और पूरे MSc केमिस्ट्री करने के बाद एक आउटकम होगा, उसको हम लोग बोलेंगे प्रोग्राम आउटकम. मतलब मैं ये कोशिश करूंगा कि MSc केमिस्ट्री के बाद एक स्टूडेंट का हम क्या उम्मीद करेंगे. सो दैट इज कॉल्ड एक्चुअली, इट इज डिजाइन टू इम्प्रूव एवरी. व्हाई वी आर डूइंग ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यू नो, one and only one objective is that to enhance the quality of education. मतलब एक्सीलेंस हम चाहते हैं, मतलब गुणात्मक सुधार. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर स्कूल एजुकेशन, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर कॉलेज एजुकेशन, वो भी आपने बहुत अच्छे से करके आए हैं. बट आप, दिस इज योर फाइनल मास्टर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री, मास्टर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री. सो improve the quality of the higher education by ensuring graduate necessary knowledge. और आज की तारीख में everything where you need the entrepreneurship, the concept of the employability, नौकरी भी चाहिए हमको, but the knowledge development, skill development is very very important. Large number, don't worry about the language. I will explain in mixed language, Hindi as well as the English. So जो लड़के हिंदी नहीं समझ में आता, अंग्रेजी नहीं समझ में आता, देखिए ये भारत सरकार का यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एवरीथिंग इज गवर्न्ड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. सो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, ताकि स्नातकों के पास आवश्यक ज्ञान, अगर आपका नॉलेज होगा सब कुछ हो जाएगा. आपका स्किल डेवलपमेंट बढ़ेगा, आपका क्यूरोसिटी बढ़ेगा. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. नो एज whenever we start, because we are also stakeholder. Stakeholder means the teachers are very important, you know. And I think you must know that there is a limitation. We are only 7.
We are only 7. I will not discuss about their H index and the citation, the list of publications, and their specialization. Gradually, you can understand those things because we will teach you. So you must know our specialization. So they are all very learned teachers, and our 2 guest teachers are also very active. So our family is total 9. Of course, soon we will get another teacher, so our 10. So student-teacher ratio is also good. मतलब total student is 120. 60 final year, 60 previous years. And 10 teachers, so we will allot 1:12. मतलब 12 स्टूडेंट के प्रति 1 शिक्षक रहेगा. And you know that mentor-mentee system is very important, and yesterday I have circulated, वो भी मैं कभी क्लास में आपको बताऊंगा. mentor-mentee, हम लोग mentor है, आप क्या है, mentee हैं. And we have already selected, जैसा मेरे साथ 10 स्टूडेंट है. So if you have any problem regarding the teaching, regarding the language, regarding the other socio-economic problem, you can directly contact with me. So हर महीना में हम लोग एक दिन mentor mentee का डिस्कशन करेंगे. Similarly, you know that they are also very important because without the skilled technical staff, so they are the also backbone of our university. आपने देखा होगा एडमिशन के समय में भी ये लोगों ने काफ़ी हमको मदद किया, और अभी भी आपको ड्यूरिंग योर प्रैक्टिकल, बिकॉज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग सिस्टम, डिफरेंशियल लर्निंग, पार्टिसिपेटिंग लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट. पुराना बात भूल जाइए, पहले क्या होता था, यहाँ आपको एक्सपेरिमेंट को खुद अच्छे वेरी हाई लेवल के एक्सपेरिमेंट को आपको करना है. एंड एज यू नो दैट, हम लोग को बहुत गर्व आपको होना चाहिए कि यू मस्ट टेल दैट दिस यूनिवर्सिटी वाज अवार्डेड ए TST पर्स ग्रांट, PURSE, that is called, you know, their promotion of the university research and scientific excellence. And 2 of our teachers, Professor Manaskanti Dev and of course Professor Shams Parvez, are the most important investigator of this system. And of course, one Professor Bisen is also there from physics department. So, as I told you, it is a holistic and multidisciplinary thing. जिसको 10 करोड़ का हमारे पास प्रोजेक्ट आया है, उसी इंस्ट्रूमेंट में आपको यूज करना है. So that is actually research. But now, as I told you, national education policy, learning outcomes, skill development, innovation, entrepreneurship, तो धीरे धीरे हम लोग किस में जा रहे हैं, फ्रॉम रिसर्च टू इनोवेशन. आपको भी कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ को करना है, मैं भी आपको बताऊंगा. स्किल डेवलपमेंट का आपका कोर्स है. So therefore, again is a good news for us that another project that is called the PAIR, ये सब भारत सरकार के बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं. और अगर आप नाम को देखेंगे, P मतलब पार्टनरशिप, ठीक है, फिर से मैं होलिस्टिक का बात कर रहा हूँ. एक्सीलरेटर का मतलब एक्सीलरेशन, आप जानते हैं, उत्थान. इनोवेशन एंड रिसर्च, and recently Government of India sanctioned 2 crores of the rupees, and again Professor Manaskanti Dev of our department is the principal investigator of the system, and again one professor from life science department, Professor Kesab Kansa, biotechnology department. So again आप देख रहे हैं कि केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी का जुड़ाव हो रहा है. In addition to that, Professor Kamlesh Srivas, Professor मनमोहन लाल सत्तामी, Dr. इंद्रपाल खरवाल are also involved. और आप अगर उसका सब्जेक्ट देखेंगे, एनर्जी, यू नो, एवरीवेयर वी नीड दी एनर्जी. जब आप प्रैक्टिकल करेंगे 4th सेमेस्टर में, अभी मैं सब्जेक्ट में आऊँगा, सो दैट इज कॉल्ड दी एनर्जी टेक्नोलॉजीज. देन हेल्थ केयर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. वाई वी आर डूइंग सम रिसर्च फॉर क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल साइंस टू इम्प्रूव दी हेल्थ थिंग्स एंड अदर थिंग. क्लाइमेट चेंज में कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एवरीवेयर यू नीड दी AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, and then advanced material, nano materials and other things. तो आप देख रहे हैं. And also one of our another teacher is also applied for supreme, लेकिन नाम से ही आपको लग रहा है, supreme support for upgradation, preventive repair and maintenance of the equipment, separation and the extraction technique.
तो मेरा ये दिखाने का मतलब ये हो रहा है, ये सब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की पढ़ाई के साथ साथ आपको स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेटिव आइडियाज़ की तरफ जाना है। इसीलिए इसको लर्निंग आउटकम बेस्ड, मतलब आप केवल एक M.Sc केमिस्ट्री बन के निकले वैसे नहीं, आपको एक परफेक्ट नॉलेजेबल, इनोवेटिव, स्किल्ड केमिस्ट बन के आना है। समझ में आया? डू आई मेक माई पॉइंट क्लियर? सिमिलरली व्हाट, इस चीज को भी आप मान के चलिए, समाज के लास्ट में जो आदमी बैठा हुआ है उसको भी हमको ऐसा कुछ रिसर्च करना है, बिकॉज वट एवर यू आर डूइंग, या इन फ्यूचर आफ्टर डूइंग द M.Sc व्हेन यू एंटर्ड इन द रिसर्च, अभी भी हम लोग रिसर्च आपके 3rd सेमेस्टर से शुरू हो जाएगा, मैं बताऊंगा, अभी कोर्स का बताऊंगा, तो आपको वी आर ऑल्सो डूइंग, माई सेल्फ, माई कलीग इंद्रपाल खरवाल, एंड इफ यू सी द टाइटल ऑफ दोज प्रोजेक्ट, आई हैव रिटन योर सोसाइटल प्रोजेक्ट। व्हाई इट इज कॉल्ड सोसाइटल प्रोजेक्ट? इनसे पूछिए, सोसाइटल प्रोजेक्ट का क्या मतलब होता है? हाँ, यस, प्लीज प्लीज। It is related to our society. Very good. And it support and help the people. That's why it is called societal project. Very good. This is called, sometimes it is called the translational research. मतलब whatever we are doing, it should be related to the common man. तो अब देखिए, नाम से आपको दिख रहा है कि आदिवासियों के लिए AI मोबाइल ऐप बनाएगा रविशंकर विश्वविद्यालय, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड IIT भिलाई इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन, they have sanctioned us very large amount. And if you see the title, AI driven financial empowerment, fintech for all, improving the financial literacy. आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि सर, you are a man of chemistry, how do you involve on all these things? So you will be happy that not only me, many teachers from economics department, Dr. Sunil Kumeti, or Dr. Sociology department, Professor Gajpal, electronics department, computer science, physics department, we all together and doing such type of the work, some medicinal plants, Indian knowledge system and other things. आपको अभी मैं धीरे से बताऊंगा. So and not only these, that you see that these teachers are also doing large number of projects related to different very important part, and patent is also very important. You see, patent, कितने लोगों ने पेटेंट के बारे में जानते हैं? तो अभी मैंने आपको रिसर्च प्रोजेक्ट्स का भी बताया, मैंने आपको सोसाइटल रिसर्च भी बताया, मैंने आपको पेटेंट के बारे में भी बताया हूँ. ये देखिए, ये देयर आर लार्ज नंबर ऑफ, इवन सम स्टूडेंट्स आर ऑल्सो देयर, तुषारकांत, कमलेश श्रीवास, टिकेश्वरी, संयुक्ता पटेल. सो अब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि पेटेंट क्या होता है. And again, you know that training, hands-on training is very important, and we have 2 classrooms, in fact 3 classrooms. You see, this is C.B. Raman Hall, generally it is for M.Sc first semester, and in first floor M.Sc second semester, and another hall is there, and we are having 3 smart board like that, and very very sophisticated equipments जो आपने कभी नाम ही नहीं सुना होगा. These are also available in our departments. A smart board, 8 research labs, and you see there are, I am just showing you 1 or 2, but ये सब आपको ही करना है, ये कोई हम लोग नहीं करेंगे, हम आपको मदद करेंगे. तो इस तरह से the first part is over, and then I will start the second part. Thank you very much.